Welcome to DIY NCERT. So in this video we will be covering about Kingdom MONERA. Yes, as we know that R.H.Whittaker has given 5 kingdom classification, so we will be starting with Kingdom MONERA. Yes, so we know that these organisms do not have a defined nucleus or organelles. You can see in this picture also सब कुछ फैला सा है ना. So yeah, और ना ही इनका कुछ मल्टी सेलर बॉडी डिज़ाइन जैसा कुछ होता है. नॉट डू एनी ऑफ देम हैव शो मल्टी सेलर बॉडी डिज़ाइन. और तो बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं नो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा, आप पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है. लाइक वी कैन सी दैट they have, like, some of them show cell walls while some do not. किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है cell walls. So this is also diversity and this is also characteristics of MONERA, Kingdom MONERA, right? And we can say that having cell wall, not cell wall, in different effects on body design, right? So this was all about the cell wall, one of the characteristics. So अभी हम जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ग्रुप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. यू नो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ डू दे गेट न्यूट्रिशन. सो दे हैव टू ऑप्शंस, लाइक one is autotrophic and another is heterotrophic. They get nutrition by both the methods. So cell wall was one characteristics and mode of nutrition is another characteristics of Kingdom MONERA. So you can see in this picture also, heterotrophic वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं. ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं as plants. So yeah, bacteria, blue green algae and cyanobacteria are the examples of Kingdom MONERA. Now you can see in this picture also, Kingdom MONERA having prokaryotes, unicellular prokaryotes, obviously they are unicellular, and bacteria, blue green algae and mycoplasma. Blue green algae was first put in the plantae, but as it does not show like it is having the unicellular, so it put in this MONERA group. Now you can see some of examples of NCERT example that bacteria, isn't it bacteria in the MONERA group, and and this longitudinal structure, it's called anamina. It's also come in the Kingdom MONERA. I hope अब तक ये समझ में आ गया होगा कि MONERA कितने सिंपल होते हैं एंड यूनिसेलुलर सेल वॉल इनका कैसा होता है, किसी में नहीं होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक इनका न्यूट्रिशन होता है. बहुत ही सिंपल एंड बेसिक होते हैं. सो I will consider it you will understand till now. So yeah, I'm writing this side by side. So yeah, thank you everyone for watching this video. I hope you understood with this concept, this basic concept, Kingdom MONERA. So keep connected, keep supporting me. So we'll meet in the next video. Till then, ta-da.